Hi, everyone. Fantastic to have you all here. I'm just checking if you are able to hear me out. Glad to be connected. And just one moment, please. And are you able to hear me, every one of you? Okay. It's lovely to see you here, Mayank, Amar, Rajesh. Uh, बहुत सारे जन जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर। संदीपन, आपका फॉर्म मिला मुझे। बहुत सारे जन वी हैव स्टार्टेड, everyone has started joining. People who are there on YouTube, are you there with me? एंड डायरेक्टर साहब यूट्यूब पे भी लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, सो दैट दे कैन ज्वाइन मी लाइव हियर। एंड यहाँ पर I'm just checking you are able to hear me out loud and clear. Fantastic, Shiva. Glad to see you here. Heman, Sandipan, and it's always lovely. So, how is the market treating you? The movement on the downside, movement on the upside, कौन से डायरेक्शन में निफ्टी जा रहा है? करना क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है दिमाग के अंदर कि एक बाजू तो वॉर हो रहा था, क्रूड ऑयल रुकने नहीं वाला था, और दूसरे बाजू क्रूड ऑयल क्रैश हुआ है। आपको पता है क्रूड ऑयल क्रैश हुआ है? किसी ने देखा कि सारे लोग न्यूज ही देख रहे, चार्ट्स कोई देख ही नहीं रहा है। सभी न्यूज चैनल पे एक ही बात हो रही है, क्रूड ऑयल इज अ कंसर्न। 90 डे का सप्लाई है, 30 डेज का सप्लाई है। इंडिया के पास सप्लाई खत्म होने वाला है। वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। ऐसी बात करें जैसे क्रूड ऑयल इज गोइंग टू बी $200 टुमारो। Everyone is talking about that. But what is happening on the chart? See the chart. Chart never lies. Crude oil is extinction. हो सकते $200 हो जाए, $300 हो जाए. I'm not denying that. But look at what is happening. I'm going to be starting with crude oil का chart very clearly. G7 confirmation to add reserve supply, ये सब चलता रहेगा। पॉलिटिकल एजेंडा अलग होता है। वॉर इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल एजेंडा रेदर देन एनी मीनिंगफुल आउटकम। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान और भरपाई लोग करते, विच इज आम जनता। एंड इस एजेंडा में सभी लोग में से नुकसान ही होता है। खाली थोड़े गिने चुने लोग हैं जिन्हें इसका फायदा होता है। सो वो जाने दीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। चार्ट पे चलेंगे और चार्ट के बारे में बात करेंगे। बट शुरुआत करने के पहले, कल एक ट्वीट डाला था मैंने, उसमें मेंशन किया था निफ्टी पुल बैक आ सकता है। दो थे उसमें, दो चीजें थी। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, आज से कल के दिन में 24,020 24,050 was the level which was tweeted in the video, and also mentioned a level for positionally that it might touch 24,200 to 24,300 level. Did you follow that tweet? And are you seeing the magic of it? किन किन लोगों ने किया था फॉलो, मुझे बताइए ना। मतलब आपने ट्रेड भले ही ना किया हो, लेकिन ट्वीट देखा था, ट्रैक किया, और मार्केट गिरते हुए मार्केट में बाय कॉल दे रहा हूं। क्रूड ऑयल चढ़ रहा है और मैं बाय की बात देखा था। आशिमा, फैंटास्टिक, आपका भी फॉर्म मिला मुझे। राजेश, हेमंत, आपने देखा क्या? बहुत जबरदस्त चलता है विजय। कैन यू सी हाउ अमेजिंगली इट वर्क्स? मतलब कोई बोलेगा यार दिमाग खराब है, क्रूड $120 आ चुका है, $100 के ऊपर है, आप निफ्टी पे बाय की बात कर रहे हो, वो भी पुल बैक में, एंड वो भी 400 पॉइंट की। मतलब लेकिन चल रहा है, 400 500 पॉइंट्स चल रहा है। बिकॉज ऑफ द गैप ऑल्सो इट्स वर्किंग। So let me very quickly start today, and is it helping you? The short, so there are three formats in which I am reaching out to you. 1 minute video, which is just about trading psychology, Nifty level, and what you have to look at. दूसरी चीज is a very detailed video of 10 minutes, and the third is the morning tweet. So uh, is it's just amazing, right? The levels that are working. फिलहाल के लिए पोजिशनल ट्रेड सेटअप से बचना है। यू डू नॉट हैव टू गो इनटू पोजिशनल। मार्केट बहुत टेम्प्ट करेगा आपको। क्लोज इतना अच्छा दे दिया है यार, कल से ही रैली होगी ऐसा लगेगा, गैप डाउन। डू नॉट गेट ट्रैप्ड। ये मार्केट में एक ही चीज करनी है, ट्रैप नहीं होना, पैसा बन जाएगा। सो यू डोंट हैव टू गेट ट्रैप्ड। दैट्स फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। सेकेंडली, डू नॉट एवरेज ऑन लूजिंग पोजिशंस। जो भी स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है उसे एवरेज मत करो। Let market stabilize and show a pullback. Once it shows a pullback, we will know how much it is going, and then if it breaks the low, we will know a lot of more things. दूसरी, तीसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन कब होता है? ले लेता हूं, नहीं रुक जाता हूं, नहीं लेना चाहिए था, नहीं छोड़ देना चाहिए।
This is all hesitation because you do not have a plan. You need to have a plan, you need to have a strategy. Only if you have a plan of what is my entry, what is my exit, and what is my target, then you will be able to make money from the markets. That is very crucial, because only with the stop loss and with the target you will be able to derive risk reward ratio. If risk reward is favorable, hit a sixer. If risk reward is not favorable, you should form an option strategy. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीजें को क्लब करना है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर ट्रेडिंग इट इज 30% ऑफ द टाइम मेथड. 30% मेथड है खाली. इट कैन बी टाइम साइकिल, इट कैन बी एलियट वेव, इट कैन बी कैंडलस्टिक, इट कैन बी एनीथिंग. 30% है रिस्क मनी मैनेजमेंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट 30% ऑफ इट विच इज वेरी क्रूशियल इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी. कि 2 बार सेम पोजीशंस पे स्टॉप लॉस हुआ, तीसरे बार आप नहीं लोगे और वही टाइम चलेगा. दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी. यार 2 बार से मैं लॉन्ग जा रहा था, मार्केट रैली नहीं हो रहा है, आज लॉन्ग नहीं गया और मार्केट रैली हुआ. दिस इज हाउ इट विल हैपन विथ यू. सो बिकॉज यू नीड टू हैव अ प्रोसेस इन ट्रेडिंग. साइकोलॉजी बहुत क्रूशियल है. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेनिंग 5% लक है. तो ट्रेडिंग ऑल टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, अ होलिस्टिक अप्रोच is combination of all of these things together and then you have to take a position. Okay, ये सारी चीज है. चलिए मैं चार्ट पे जाऊंगा. यहां पर चार्ट बहुत क्विकली शेयर करता हूं, लेकिन पहले टेलीग्राम लिंक शेयर करिए सभी के साथ में. पीपल आर यू फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम? लिंक्स है क्या आपके पास में? करेक्ट टेलीग्राम की. फेक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो जाना. डू रिमेंबर, आई नेवर डू एनी काइंड ऑफ गारंटी. देयर इज नो गारंटी इन मार्केट. रिमेंबर दैट. इफ समवन इज सेइंग दैट, दैट्स नॉट मी. रिमेंबर दैट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना यहां पर. और 4 मार्च का हमारा एक टाइम साइकिल था, उसका क्या हुआ? सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय टाइम साइकिल, व्हाट्स हैपनिंग देयर, नियो वेव पर्सपेक्टिव, व्हाट इज हैपनिंग देयर, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब क्लब करके मैं आपको आज बताने वाला हूं. मैं बहुत ही क्विकली मेरा टेलीग्राम का लिंक ढूंढ रहा था मैं, जहां पर टेलीग्राम का क्यूआर कोड मिल गया, जहां आप ज्वाइन कर सकते हो. वंस यू ज्वाइन, गिव मी अ बिग थम्स अप दैट यू हैव ज्वाइन टेलीग्राम. अपडेट्स आएंगे नीचे. टेलीग्राम में एड्स आता है विच आई कैन नॉट स्टॉप. प्लीज डू नॉट क्लिक ऑन दोस एड्स which comes at the bottom, which shows you a guarantee of making money. Do not fall into that. That's a quick disclosure. Keep that in mind. Okay? यहां पर चलिए आप लोग फॉलो करें. आगे बढ़ता हूं मैं. चार्ट के ऊपर चलते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है and I'm going to simply show you what is there. I'm going to read my mind out to you all. ये चार्ट देखिए. ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है. ठीक है. यहां पर इसमें गड़बड़ है. दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट. जहां पर गड़बड़ क्या है, कौन बताएगा मुझे? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट. टेल मी, इस वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे क्या प्रॉब्लम है फिलहाल के लिए? ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन. यस. कैंडल हैज क्लोज्ड. यस. बट पहली चीज जो मैं आपको सिखाता हूं सारी मास्टर क्लास में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है यार. ट्रेंड इज नेगेटिव, ट्रेंड लाइन ब्रोकन, लेकिन एक चीज जो मैं बात करता हूं उसकी बात ही नहीं हो रही है. नॉट पॉजिटिव. सलमान मिस्त्री, फैंटास्टिक. 3 कैंडलस्टिक रूल, विशाल, आशिमा, फैंटास्टिक. 3 कैंडलस्टिक रूल, ये बुलिश कैंडल नहीं है फिलहाल के लिए. वीकली चार्ट पे ये बेरिश कैंडल है. डू यू नो द 3 कैंडलस्टिक रूल? दिस हाई इज बिलो प्रायर हाई, दिस लो इज बिलो प्रायर लो, दिस क्लोज इज बिलो प्रायर लो. सो ये बेरिश है. लेकिन अभी तो ट्यूसडे, अभी तो दिल्ली दूर है, यू नेवर नो. हम इसके ऊपर भी आ जाए तो भी बेरिश ही रहेगी, क्योंकि लो इज बिलो प्रायर. ठीक है. तो मतलब मार्केट वीकली पे टर्न नहीं हुआ और ट्रेंड लाइन, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ. पहली चीज वीकली पे टर्न नहीं हुआ है. दूसरी चीज ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है. गड़बड़ है 85 वीक साइकिल में. सितंबर 2026 तक की गड़बड़ हो सकती है अगर ये एक हफ्ते के अंदर मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दिस इज नॉट ड्रीवन बाय अ सिस्टमैटिक मूवमेंट. इट इज ड्रीवन बाय एन इवेंटफुल मूवमेंट. मैंने कल सीएनबीसी पे भी बात की थी क्रूड ऑयल के बारे में, मैं बताऊंगा उसमें क्या कहा था.
since this movement is driven by event, the chances of a false break increases because it's event driven. सिस्टमेटिक सेल ऑफ होके ब्रेक होता है, उसके ऊपर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वॉर के कारण ब्रेक हो गया, ग्लोबल सेल ऑफ हो गया, उसके कारण रिलायबिलिटी कम हो जाती है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना। पुल बैक आया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे इससे क्लैरिटी मिल गई। क्या क्लैरिटी मिल गई? द लो ऑफ दिस कैंडल विच इज 24,697 is going to be the utmost important level। 24,697 के नीचे, सॉरी 23,697 के नीचे अगर निफ्टी ने क्लोज दे दिया विच इज दिस कैंडल लो, तो सितंबर 2026 तक की मंदी है। सो मैं थोड़ा लीवे दे रहा हूं यहां पर इसी कारण, बिकॉज ये इवेंट ड्रीवन है। तो कौन सा लेवल है? 23, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, 697। This is September 2026। This is the key level that Nifty should protect। कौन से लेवल के ऊपर मार्केट स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? 24,728 मैग्नेट, दैट्स द मैग्नेट। नाउ ये मैग्नेट पहले सपोर्ट था, there is something known as polarity reversal, so this support will now become a resistance। 24,728 will now act as a resistance। we need to recapture this level as soon as possible, as soon as possible। और मैं तो चाहता हूं ये रिकैप्चर तब हो जब वॉर सीज फायर ना हो, बिकॉज देन इट विल बी शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब मुझे बात बताओ, सीज फायर हुआ, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, इज देयर एनी काइंड ऑफ यूएसपी देयर शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ? वॉर हुआ, मार्केट गिर रहा है, मतलब बिग डील, पता है वो तो क्या ही है उसका। बट सीज फायर नहीं हुआ, वॉर चालू है, एंड निफ्टी कैप्चर्स 24,728। कैन आई से नाउ देयर इज समथिंग कुकिंग अप दैट वेरी फ्यू बिग प्लेयर्स आर नोइंग? आई एम मेकिंग यू, हाउ आई एम एम्पावरिंग यू, आई एम trying to tell you how to think like a trader, how to think like a successful trader। If Nifty manages to go about 24,728 despite of the war ongoing, that shows a relative strength, that shows relative outperformance, that shows beyond logic. It is not making sense। That's where we get a classic level of trade। Classic, if that happens। So दो लेवल मैंने आपको दिए, यहां पर ये दोनों पे नजर बनाए रखना। जो पहले निकलेगा उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। सितंबर 2026 की डेट है। तो निफ्टी वीकली चार्ट शोज वेरी क्रूशियल लेवल्स 23,697 and 24,728। move beyond these levels will provide strong breakout until September 2026। You cannot miss this move। This is big move from a medium term perspective I am talking about। Okay, फास्टर रिकवरी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, 728 इज द गेन लेवल। दैट्स हाउ आई एम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो वहां पर हम जाएंगे, उसके पहले तक स्कैल्प ही करना है हमें। उसके पहले तक पोजिशनल ओवरनाइट कैरी नहीं करनी है, अनलेस आप स्प्रेड बनाओ। उसके पहले तक हमें स्कैल्प करके ही बेसिस पे चलना। नाउ दिस इज अ वीकली ट्रेंड दैट आई टॉक्ड अबाउट राइट नाउ, एंड वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम अ वीकली ट्रेंड। फ्रॉम अ नियो वेव पर्सपेक्टिव, दिस इज वेव जी स्टिल ऑन गोइंग। गट फीलिंग मेरा है, मतलब when I talk about gut feeling, just bias। I can be biased, right? It is okay to be biased, yeah, but that does not mean I trade with my bias। The difference between a smart trader and the difference between a novice trader is only that both have bias। दोनों को लग रहा है ऐसा होना चाहिए। One trades with every bias,
and the second one does not trade with bias. Second one just trades basis of what the chart shows. So I'm biased. I have a gut feeling that we will go back, crawl back above the trend line. Gut feeling है, लग रहा है, लेकिन that's my gut feeling. I can go wrong, so it's okay to be wrong. बट चार्ट पे वैसा कुछ नहीं है फिलहाल। एक ही चीज है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, जिसके कारण ये गट फीलिंग मेरी थोड़ी स्ट्रांग है। व्हाट इज दैट फीलिंग? यहां मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हूं। आर यू एबल टू सी दिस डेली टाइम फ्रेम चार्ट गाइस? दूसरी चीज जो देखनी है हमें, द डेली बायस हैज टर्न्ड अप एज पर द थ्री कैंडलस्टिक रूल। ओके, बट वन डे ऑफ डेली बायस इज नॉट द ओनली रीजन, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। वन डे ऑफ डेली बायस, ओ इट फॉर्म्ड अ लॉन्ग हैमर एंड कल वापस बेरिश होगा, नहीं। डेली बायस टर्न्ड अप, ये हैमर दिख रहा है लेकिन हैमर है नहीं, क्योंकि ओनली इफ वी ब्रेक बिलो दिस लेवल लो which is 24,079, this hammer will carry its importance, otherwise it has no meaning. This is where people fail, this is where people fail, every one of you. तो यहां पर दो चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। वीकली बायस नेगेटिव है, डेली बायस पॉजिटिव है। पैसा बनाना आसान होगा क्या? आई एम आस्किंग यू, पैसा बनाना आसान होगा? नहीं ना, क्योंकि एक बाजू गिर रहा है, दूसरे बाजू इवेंट आता है, फिर गैप डाउन हो जाता है, लग रहा है ऊपर जा रहा है, फिर 600 पॉइंट नीचे खुलता है। डिफिकल्ट होगा। सो डू नॉट कैरी पोजिशंस। ऑप्शन सेलिंग फिलहाल नहीं करनी, ऑप्शन सेलिंग करना है इंट्राडे में, ऑप्शन सेलिंग करना है इंट्राडे में। ओके, वेरी क्रूशियल। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इफ आई लुक एट दिस पास्ट 55 डेज ऑफ साइकिल, नाउ वी हैव मैनेज्ड, एक तो 4 मार्च पे साइकिल था, बाउंस बैक हुआ, लेकिन वो एक ही दिन का था तो वो रिलायबल नहीं। वी आर स्टिल इन दैट जोन। नाउ वी हैव मैनेज्ड टू बाउंस बैक शार्पली आफ्टर रिट्रेसिंग 50% ऑफ द राइज। ये जो पूरा फॉल था दोस्तों, ये फॉल का 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। सॉरी, ये राइज का 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। 61.8 was around 23,500. We fall short of it. We are back about that 50% FIBO retracement here. So we are back into that level. Okay, that is very, very, very important. Now, in this level of 50% retracement and bouncing back, we are in that 55 days time cycle zone. Since we are in the 55 days of time cycle zone, which is this zone, it is a good sign that we are in that time zone. This level breached, my weekly bearish तो ही daily strongly bearish हो जाएगा, which means this final ultimatum line is 17th of March. अल्टीमेट, उसके बाद लो नहीं बनना है, उसके बाद तो कोई सेंस ही नहीं है। फिर लो बनना है तो इधर ही बनना है, एंड वी हैव सीन अ पुल बैक। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आई नीड अ डिप, आई नीड अ डिप and then the high to be taken out. If I get a dip and the high to be taken out, can I now have a strategy? Let's go on an hourly chart. We'll go on a 15-minute chart also. But यहां पर बहुत ही सिंपली वे से मुझे ये समझ में आ रहा है, डेली और वीकली में गड़बड़ है। आवरली पे क्या है? आवरली पे वेव काउंट क्या है, वेव पैटर्न क्या है, आवरली पे क्लोजिंग क्या है, वो समझने की कोशिश करो। ओके, now if I'm seeing this chart very clearly, just look at this chart. Okay, this I this entire movement was on the downside is what we are seeing. This is the channel, we just closed at this channel. कल गैप अप या गैप डाउन ही होना है, वो तो पक्की बात है। From here, now on an hourly time frame chart we have, if I buy now, what is the problem? चलो वीकली को जाने दिया, डेली तो पॉलिश पॉजिटिव है। आवरली पे अगर मैंने अभी बाय किया, एक पैरामीटर जो मैंने आपको मास्टर क्लास में सिखाया वो फिट नहीं होता है, ब्रह्मास्त्र में किया है ना हमने, फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड बैठता ही नहीं है। यहां बाय किया, यहां स्टॉप रखूंगा क्या? कितने पॉइंट का स्टॉप है?
भाई इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो कितना चला जाएगा? विच इज दिस इफ आई एम बाइंग नाउ? 586 पॉइंट, 600 पॉइंट का रैली है, कल के वीडियो के बाद में 600 पॉइंट का रैली है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है। अभी रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा कैसे? वंस आई सी अ डिप, यहां से डिप चाहिए, कल आए गैप से आए कैसे भी आए, डिप आने के बाद में हाई निकालना है। नाउ आई हैव अ क्लासिक सेटअप टू क्रिएट बुल कॉल स्प्रेड। अभी भी मैं नेकेड बुल कॉल नहीं लूंगा, बुल नहीं लूंगा, ऑप्शंस कॉल नहीं लूंगा, मतलब बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा, क्योंकि यहां एक कंफर्मेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेटअप समझ में आ रहा है आपको? एक तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया, गड़बड़ थी, एंड दिस कैन बी वेव वाई विच इज गोइंग ऑन विद इन दिस वी माइट हैव कंप्लीटेड ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट आप देख रहे हो यहां से, वी कैन बी फॉर्मिंग अ ट्राइंगल पैटर्न। कैसे? सो दिस फॉल कैन बी वेव ए, this pullback was wave B, and then this fall we had in the form of wave C. C के अंदर हो सकता है, ये बहुत गैपिंग एक्शन है इसलिए ट्रिकी है। So we might have completed C here, which was on the channel. Then we got wave X here. Then we got another fall in the form of wave A. Now, basis of my new wave pattern, there is a possibility we might be completing this entire structure in the form of a triangle pattern. ट्राइंगल बनेगा किसके बीच में? 24,800 एंड 23,690। दैट्स माय जोन। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। सो 24,820 इज द एग्जैक्ट लेवल एंड 23,690। सो वी कैन एंड अप फॉर्मिंग अ ट्राइंगल पैटर्न। ओके, यहां पर सो निफ्टी ऑन आवरली चार्ट shows a possible triangle pattern formation between 24,820 and 23,690 levels. Okay, sell near resistance and buy near support. That is the simplest way in which you can do it. Daily bias has turned up, but weekly is still bearish. So option strategy during such times will work like magic. क्लियर है? ये लेवल्स के बेसिस पे अभी वंस आई नो द पैटर्न पॉसिबल फॉर्मेशन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट इज द पॉसिबल पैटर्न दैट वी कैन सी ऑन द चार्ट। द पॉसिबल पैटर्न है ट्राइंगल जैसा बन सकता है, वी माइट बी जस्ट इन दैट फेज ऑफ फॉर्मेशन एंड वी विल सी। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन अ चार्ट। नाउ यहां पर once we have done this entire analysis and we know this is how it's going to behave, one technique will work beautifully if it's indeed going to be a triangle. कौन सा टेक्निक? कौन सा इंडिकेटर? Which indicator? You know why people are not consistent despite of the skills that they have? Because they are not following the right indicator at the right point of time. एक ही इंडिकेटर वो तो है ही, लेकिन Bollinger Bands will work wonderfully well in case of a sideways market. Bollinger Bands will work very well because we are expecting a sideways market. Because of the movement is vast, you have to be little careful because of the swings are big. So start applying Bollinger Bands. That's why people lose money in the market, not because they don't know Bollinger Band, they don't know RSI, they don't know Ichimoku Cloud or time sale, because they do not have a method or a process. They have a method, but they don't follow it. Process है, लेकिन follow नहीं करते. That's why they lose money. That's why retailer get trapped in volatile market. You know why retailer get trapped in volatile market? Because they are fixed with a one side view and market keeps reversing every time they are bullish or they are bearish, market reverses. होता क्या, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, ऑयल इज गोइंग टू टच $200,
बेच दो। आपने यहां बेचा, क्या हुआ? इतना बड़ा मूव आया, मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप होगा, बाय कर लो, फिर नीचे। दैट्स व्हाई रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड, बिकॉज यू आर हियर। आई डोंट वांट यू टू गेट ट्रैप्ड, आई वांट यू टू लर्न द साइंस which actually works. What science works? What methods work? I'm showing you one 15-minute chart now. Look at this 15-minute chart. Look at the time cycle. Fantastic. Do you remember ये डेट हमने निकाली थी? सैटरडे को कौन कौन था मास्टर क्लास में? जूम पे एक्सक्लूसिव था, यूट्यूब पे रिप्ले नहीं था। सैटरडे को हमने एक डेट टाइम निकाला था, यू रिमेंबर गाइस? क्या टाइम था वो? देखा था हमने, चेक किया था मंडे को कितने बजे रिवर्सल हो सकता है मार्केट में। ऑस्पिशियस टाइम क्या था? 10 AM। निर्मित शाह, याद है? उस हसन, 10 बजे का टाइम याद है ना मयंक? एवरीवन, 10-10:30 का टाइम। ये जोन दिख रहा है आपको? वो जोन से कैन यू सी द मैजिक? कैन यू सी हाउ इट इज सिंपली सुपर? यहां पर स्विंग हाई निकला कि स्विंग लो निकला? व्हाट आई टॉट यू, लेट्स सी। वॉट एवर आई हैव टॉट यू, लेट्स सी। मैं ये नहीं कह रहा आप यहां लो पे पकड़ो, मैं ये नहीं कह रहा आप लो पे बाय करो। व्हाट आई एम आस्किंग इज स्विंग हाई और स्विंग लो इज ब्रोकन, 23,930 पे बाय कर सकते? ये स्विंग का स्टॉप लॉस, टारगेट आया कि नहीं, चलता है कि नहीं, रिस्क रिवॉर्ड चलता है, बना जबरदस्त सेटअप। इट इज मैजिक, वी आर एग्जैक्टली हियर अगेन। अब कोइंसिडेंटली ये जस्ट उधर था, ब्रेक नहीं किया तो रुक जाना है, कैरी नहीं करना है आप। हाँ, मतलब वो इशू है कि आप ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते थे, बट यू कुड हैव क्रिएटेड अ स्प्रेड इन ऑप्शन टू कैरी द पोजिशन। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बॉट अ कॉल ऑप्शन, 150 पॉइंट दूर का स्ट्राइक बेच दो ना, देन कैरी करो, बिकॉज यू आर हेज्ड। दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट। मयंक त्रिवेदी कह रहे सर कॉट 10 AM एज वेल टुडे, गैप स्ट्रेटेजी। गैप स्ट्रेटेजी भी सिखाया था मैंने आपको, ब्रह्मास्त्र में किया है मयंक। ये सारी चीजें तो हमने बहुत डिटेल में की है, आप तो हमारे पार्ट हो। और ब्रह्मास्त्र में एक और चीज है, मैं तो भूल ही गया बताना, वी हैव लॉन्च्ड हॉल ऑफ फेम फॉर ऑल अवर ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स। डिड यू गेट द इनवाइट? मयंक, सौरभ, जो भी है यहाँ पर हमारे ब्रह्मास्त्र वाले पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को इनवाइट आया ना? आशिमा, फैंटास्टिक, आई गॉट योर फॉर्म ऑल्सो। मोहम्मद, हमें किन 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 लोगों का फॉर्म आ गया है, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, सब देख रहे, बहुत सारे चीजें हैं हमारे पास में। आदित्य, मोहम्मद, मिलिंद, पृथ्वी, सुरेश, रवि, आप लोग हो रहा है यहाँ पर। फैंटास्टिक। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी क्विकली, लेट थोड़ा सा डिविएट हो रहा है टॉपिक पे। व्हाट वी आर डूइंग, if you are a part of our Brahmastra, which is mentorship program, you will learn with me as being there for lifelong whenever you need me. We have launched Hall of Fame, where I am going to showcase you across our social media platforms, but basis of proof. I need proof. What you have done, how you have done it. If you got lucky or it was a method or a process that you followed. If you have followed a process and a method, I will be showcasing you Hall of Fame across our social media. That's one. दूसरी चीज, I will be exclusively giving you 30 minutes of my time to polish and sharpen your skills further. That I'm going to do you to answer any question that you might have. This is exclusively for Brahmastra participants who are filling the form for the Hall of Fame with the proof, with all these things. It's not going to be easy to crack it. I need proof. I need details. I need process. I need methods that you followed. I need complete transparency of what you did, what you did not do. I want to rule out whether you got lucky or whether you genuinely are making it happen. And then once we select, you have an exclusive time with me for 30 minutes, one on one, और मे बी 2-3 मेंटीज जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, डिपेंड्स, एंड वी विल डिस्कस क्लियरली हाउ टू मेक इट बिग फॉर यू फ्रॉम हियर टू दैट. Will it be useful, every one of you? All the mentees I'm asking you, is it going to help you? This is for you all. My just to ensure that आप वहां तक पहुंच चुके हो. Now how to be in the third wave on the upside. And that's what we are going to do. And
We will record your testimonial. We will record what went wrong with you. We'll record what went right with you. These videos will be uploaded on my platform. I will tag you. I want you to flourish not only in terms of trading, but also in terms of visibility as a brand. I'm going to make it happen for you. Okay. Ashima Sood has been the first one whom we have selected for the Hall of Fame. And I really appreciate her persistence, perseverance, and dedication in the way that she has done things. It has been simply amazing. Simply amazing. I'm going to learn things from her as well today because we are going to have one-on-one session today, Ashima. The time will just confirm at, I think it's at 6 o'clock. Keep your questions ready. It's going to be strictly for 30 minutes and I will be learning from you. So is that okay? A mentor will be learning from a mentee. What more can you expect? So it's going to be amazing. So बहुत quickly बहुत सारे जन थे यहाँ पर. So I thought and this is how we are going to shout out names of people who are making it big. If you need my endorsement anywhere for anything, I'm going to give it across to you. May it be LinkedIn, may it be certificate, may it be anything. I am going to be there with you. So that's what is my commitment. As I said, Brahmastra mentorship is my commitment for every single one of you for lifetime. I am going to ensure you make it big. It can be trading, it can be anything, it can be life transformation. I'm going to make it happen for you. But you have to be committed to the process, the method, and the strategy. That is your commitment that I need. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अभी बात करेंगे क्रूड ऑयल की. एंड लेट मी गो बैक ऑन द चार्ट. दिस इज टाइम साइकिल. वी विल बी डिस्कसिंग. हमारा ब्रह्मास्त्र का कल एक बैच शुरू होने वाला है which is going to be amazing, guys. From the latest Brahmastra batch is going to be there tomorrow. Be ready. Invites आपको Zoom का आ जाएगा. Zoom की लिंक आ जाएगी. Tomorrow, Wednesday, 7 p.m. We are starting with the new batch of Brahmastra. It's going to be lovely. Let me now go back on my crude चार्ट. क्रूड की बात करते. सारी दुनिया बात कर रही है क्रूड की, लेकिन कोई सच्चाई नहीं बता रहा. लेट्स लुक एट इट. लेट्स लुक एट इट. डेली टाइम फ्रेम चार्ट. Okay, Sandeepan kare we get levels so far. Now we are going to get blessings for Surgery live. It's amazing. Thank you very much. This is crude. Now क्रूड का कल मेरा सीएनबीसी पे इंटरव्यू था. आई टॉक्ड अबाउट एंड पीपल ऑन यूट्यूब डू इंश्योर यू जॉइन मी ऑन द Zoom प्लेटफॉर्म. यहां पर आ जाइए. आई टॉक्ड अबाउट अ लेवल. दिस वाज, यू रिमेंबर Feb 2022 क्या था? Anyone remember Feb 2022? Where was Feb 2022? This was Jan. This is Feb 2022. ऐसा क्या हुआ था Feb 2022 में? What happened? कौन किसे याद है क्या? Feb 2022 was Russia-Ukraine war started. And crude oil, as always, everyone expected it has to jump, it has to go this and that, everything happened and crude oil jumped. Of course, यहाँ पर top out हुआ. This level was 130. This is WTI crude I am talking. Brent crude का levels अलग होगा. Then there was a dip and a reattempt towards, surprising कौन सा level था? $122. $122. ये कौन सा level है? $120. Russia-Ukraine war has been going on since years now. And see what happened to crude oil. Q. The war is a war, right? It's still going on. And see what happened to crude oil. I'm not saying we will not go up or those things. I'm saying that the common sense will not work. If you apply common sense in markets, it will not work for you. You need to apply some sensible strategy. Crude oil from $120 corrected yesterday itself. ये weekly chart है, मैं daily पे लेके चलता हूँ. You will not believe what happened. यहां पर अगर आप जाएंगे, बहुत ही क्लियरली यहां पर एक चार्ट है. Daily time frame. This is crude oil daily time frame chart. Tell me one thing, okay? Whether you agree with me or disagree with me. The war is still ongoing.
The war is still ongoing. Nothing changed. Yes or no? The oil wells, the oil refineries which were bombarded with missiles, still burning. Did anything change? Still burning? Did anything change? I'm asking you, yes or no? Just give me a yes or no. I'm okay with it. Just a yes or no. The oils are still burning and the supply is still disrupted. Strait of Hormuz still disrupted. Yes or no? What changed? Nothing changed. Nothing changed. But the oil prices corrected sharply. Now you will find out some reason G7 summit and this and that will come out. How does it help? Everyone is looking at only one side of the equation. No one is talking of the other side of the equation. You know, market में trade क्यों बनता है? One side of the equation is supply. What is the other side of the equation? Can someone tell me? One side of the equation is supply. What is the other side of the equation? What is the next side of the equation? Demand. Everyone talks about supply, supply, and supply. Are you not seeing the demand also is collapsing because of whatever issues that is been going on? Demand collapse भी तो हो रहा है. So why is only supply going to manage everything? Why is not demand considered in case of any kind of pricing? So the point I'm trying to make is supply तो जाने दो, demand भी तो है ना यार. Demand की तो बात करो. No one is talking about that. No, demand is inelastic. It has to go up because oil तो चाहिए ही चाहिए. That's your assumption. Oil prices crashed in 2008. You know what was the oil high in 2008? पता नहीं, बहुत कम जन होंगे वो जमानों से. Because the market churns out the traders every 3 months. 3 months. That's the lifespan of a trader. Unless you learn, unless you have a mentor and you increase your lifespan. Otherwise, the market will keep churning you out every 3 months. Churning का मतलब क्या होता है? 3 महीने एक सेट ऑफ ट्रेडर्स आते, लॉस करते निकल जाते, नए ट्रेडर्स आते, लॉस करते निकल जाते. That's how the churning happens. I don't want you to churn. Everyone who is associated with Ashish Kyal Trading Group will not churn out of the market. They will remain persistent, perseverance, consistent, but with stop loss and method. Crude oil topped at $147 in 2008. उसके बाद क्रैश आया क्रूड ऑयल में. कितना गया मालूम है? कितना गया था क्रूड ऑयल क्रैश आने के बाद? कैन एनीवन टेल मी? 2008 में ही क्रैश आया. It went below $47 also. It went to as low as $37 crude oil. 37, $48. नहीं, नेगेटिव तो 2020 में गया था. So crude oil went to as low as $40. एवरेज बता रहा हूं मैं. $147 to $40. What happened? Everyone talked about world is going to be brink of collapse because of crude oil. Now crude oil collapse. What happens? So जाने दो, ये इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो यू हैव टू understand the equation. Now, what is the understanding here? I'm not saying we will not go up. I'm not saying we will not cross 120. What I am trying to tell you is that we have formed a meaningful top. And the markets, for me, crude oil look to have topped out because war has started. Crude oil rallies in anticipation of an event. Once the event happens, the anticipation goes down. But the topping out can happen now or topping out can happen in 1 month. That's the only period that you have to wait and watch. Russia Ukraine topping out happened in 2 months of time. फैब में वॉर चालू हुआ, जून में टॉप आउट हो गया. यहां पर वॉर चालू हुआ, टॉप आउट हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है 2 महीने बाद हो, बट इट्स गोइंग टू टॉप आउट. That's how I'm looking at crude oil as of now. As of now, once it has topped out, systematic way of movement will start. So systematic way of movement means event shock था, हो गया, खत्म हो गया, now it will come down and then systematic way of जो होना था वो चलेगा, पैटर्न बन गया. Okay, that's very crucial and this experience counts. So when you have a mentor, this experience counts. You can save years of mistakes that a mentor has learned over the period of time. I'm just saying you. Okay, यहां पर या समझ में आया आपको? मैं एक और चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं क्रूड ऑयल का ही. कल मैंने मेरे वेबसाइट wavestrategy.com पे पब्लिश किया था.
वो चार्ट को आप देखिए, ये wavestrategy.com है, यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल सेक्शन है, ये एक आर्टिकल सेक्शन है, यू कैन ऑलवेज गो, दैट्स अ फ्री आर्टिकल सेक्शन, दिस इज माय वेबसाइट, एंड वंस यू गो हियर यू विल सी अ रेशियो चार्ट, निफ्टी टू क्रूड ऑयल का एक रेशियो चार्ट मैंने यहाँ बताया, 240 एंड 200. डू यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू द रेशियो? शैल आई शो इट टू यू? एंड आई मेंशन क्लियरली, नीचे लिखा भी है, दिख रहा है ये चार्ट, दिख रहा है ना, एवरीवन इज एबल टू सी दिस चार्ट? ये चार्ट देख के मुझे बताओ, क्रूड ऑयल में ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव है? नेगेटिव मींस निफ्टी गोज अप क्रूड ऑयल गोज डाउन, या वाइस वर्सा। पॉजिटिव मींस निफ्टी ऊपर क्रूड ऊपर, निफ्टी नीचे क्रूड नीचे। By looking at this chart, it looks more positive correlation than negative. And I'm just saying statistics. I'm talking from statistics perspective. You know why retailers lose money? They go with common sense in markets, which does not work. Logic does not work. यार ये तो कॉमन सेंस है, क्या बात कर रहे हो, क्रूड ऑयल $122 है, आप बोल रहे हो निफ्टी रैली होगा 500 पॉइंट से, क्या हो गया आपको? Did it work? I'm saying everyone assumes things. It is inverse correlation because everyone talks that way because it's logical. क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिमांड डिसरप्शन होगा, चीजें महंगी होगी, एंड मार्केट शुड गो डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। किसने बोला? क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा बिकॉज डिमांड इज हाई, इंडस्ट्री इज डूइंग वेल, ग्रोथ इज हैपनिंग, सो क्रूड ऑयल इज रैलिंग। डिमांड साइड भी तो हो सकता है। इट्स नेवर दैट वे, everyone understand it. Rally in crude oil can also be demand driven, it can be supply constraint, it depends completely यहां पर. So do not worry, this is how it works, this is a correlation chart, I am not getting into the detail of it, यहां पर जाके आप पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है क्लियरली, दिस इज ऑन माय वेबसाइट wavestrategy.com. है क्या इंटरेस्टिंग ये चीजें? गाइस, आर यू विद मी, और दिस इज बिकम टू हेवी फॉर यू? You know, it is 45 minutes already. 45 मिनट्स हो चुका है, हम बात कर रहे हैं यहां पर। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्रूड ऑयल की बात की मैंने, जैसे कहा, क्रूड ऑयल का रेशियो देखे वापस से, निफ्टी टू क्रूड ऑयल रेशियो, इट इज इंटरेस्टिंग। सिंपल चार्ट देखा है, कुछ नहीं करना, सिंपल चार्ट बनाओ, निफ्टी चार्ट, साथ में यहां पर मैं यूके वाला ऑयल ले रहा हूं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ले रहा हूं, क्योंकि WTI क्रूड नेगेटिव हो गया था, वो स्पाइक मुझे निकालना है, इसलिए ब्रेंट क्रूड ले रहा हूं। वो नेगेटिव क्यों हो गया था, कब हो गया था, 2020 में, वो एक अलग स्टोरी है। यहां पर मैं वीकली चार्ट पे था, ये देखिए लेवल, ये देखिए वेव पैटर्न के साथ में निफ्टी टू क्रूड ऑयल, जो लेटेस्ट एकल का चार्ट है, आज देखिए कहां पर पहुंच गया वो रेशियो, फिर से इधर 265 पे 240 के ऊपर आ गया, 240 के ऊपर आ गया वो रेशियो, बैक हियर, विच मींस निफ्टी रैलीड, क्रूड ऑयल क्रैश्ड, रेशियो इज अप। निफ्टी अपॉन क्रूड ऑयल का रेशियो, मतलब निफ्टी डिवाइड बाय क्रूड ऑयल किया मैंने। मैं अभी इसके चार्ट में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में कल मेंटरशिप में बात करने वाले, 3 घंटे रेशियो एनालिसिस पे बात करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक, हाउ टू आई पिक अप स्टॉक्स, हाउ डू आई विन 37 टाइम्स खिलाड़ी नंबर 1, हाउ टू रिस्क मैनेज, हाउ टू ट्रेड दिस रेशियो, ये सारी चीजें ब्रह्मास्त्र में बात करने वाले कल के दिन में। फिलहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग गाइस, सो लेट्स ड्रिल डाउन हियर नाउ फाइनली। यहां पर मैंने आपको खाली आज थोड़ी सी ट्रेलर बताई है, मूवी तो कल से शुरू हो रही है। आई एम जस्ट चेकिंग विथ हु ऑल आर देयर विथ मी टुमारो, मैं एक पोल ले लेता हूं बहुत ही क्विकली, हमारे मेंटरशिप में कौन कौन है कल जो ज्वाइन हो चुके हैं। यहां पर मैं बहुत क्विकली पोल ले रहा हूं, कल से स्टार्ट हो रहा है भाई, ध्यान देना, एवरीवन हु इज हियर विथ मी, हु इज अ पार्ट ऑफ मेंटर, इट्स इंपॉर्टेंट and it's very crucial how I am going to guide you how to avoid those mistakes, how to ensure that you do not repeat those mistakes again and again. It's going to be very very important, वो सारी चीजें मैं करूंगा यहां पर
which I'm going to guide you in a very systematic fashion. So ब्रह्मास्त्र का मैंने यहाँ लिंक लिया है, एक पोल लिया है, and I'm open for questions, guys. This is for the new batch of mentees where I'm going to discuss about ratio chart first, because that's the crucial part of it. We'll look at Nifty to Bank Nifty ratio, how to trade it. We'll look at Nifty to gold ratio, how to trade it. We'll look at dollar index, what's happening there. I'm going to make you look at global markets in the chart, not by news driven. बहुत फेक न्यूज है, बहुत फेक रूमर्स है, सब जन कुछ और बात कर रहे हो कुछ और रहा है. Chart never lies. And I have seen that cycle. I've been there in the market since 20 years now. 2006 का क्रैश देखा था, penny stock crash. 2008 का क्रैश देखा, lost my job in Lehman, did lot of things. 2020 का क्रैश देखा, निफ्टी कहां से कहां पहुंचा, बहुत सारी चीजें की है. बुक लिखी है 2020 में लॉन्च हुई, which you can see it written here. So बहुत सारी चीजें हैं. It's going to be tomorrow where we are going to start the journey. Are you all excited who are part of the Brahmastra ongoing batch? And it's going to be lovely. You will also be a part of the Hall of Fame that we are starting as a new initiative to make people understand it works for them also. Not only for me, it works for them also. That's very, very important. Charts create and time create the events and not the vice versa. Fantastic, Sandipan. Absolutely. There is no second thought. Any questions, please? But कोई एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बहुत ही सिंपली. इज दिस वेबिनार यूजफुल? इज इट हेल्पिंग यू सीइंग मार्केट इन सच अ वे? देखो ना क्या लवली एलियट वेव काउंट है यार. मैं चार्ट देखता हूं, आई वाज लाइक वाओ, क्लियर 5 वेव्स दिख रहा है, क्लियर 5 वेव्स. बल्कि थर्ड के अंदर भी 5 दिख रहा है यार. क्या सुपर्ब है. मतलब मैं एक एक काउंट कर सकता हूं आपके सामने. इसको 1, ये फ्लैट दिख रहे हैं, ए बी सी में 2. ये एलियट है, नियो वेव नहीं है. आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दैट. देन वी हैव अ क्लासिक थर्ड, देन वी हैव अ सुपर फोर्थ, देन वी हैव अ फिफ्थ विद इन थर्ड. एक एक मूवमेंट दिखता है यहां पे, एक एक मूवमेंट जबरदस्त है. दैट्स द पावर ऑफ wave theory. If you know wave theory, if this is complete, if C is complete, we will see against the science of everyone's logic, the ratio going up. Ratio going up means Nifty will rally or crude oil will fall. If this happens, too soon to conclude, overnight position nahi leni hai, I will tweet, I will share it when that happens. When that happens. All the webinar is like blessing of God. It always mesmerizing. Thank you very much. Glad to know that you are learning every time something new, and it's working for you all. And people on YouTube, do not forget to like, subscribe, join kare channel ko. There are small joining channels that you can do as well. And any other questions, sir? I might miss session tomorrow. Will I get the recording? Yes. Do not worry. All the recordings of our mentorship program will be given to you until the mentorship ends. दूसरी चीज, हम लाइव चार्ट पे बात नहीं करने वाले mentorship में. I'm making it very clear. We will be discussing it on historical charts. We'll be showing you on historical charts. You are going to also you are going to share your link with me. After मैं बताऊंगा आपको, रेशियो एनालिसिस सिखाऊंगा आपको, आप खुद से करोगे. आप वो चार्ट की लिंक मुझे मेरे साथ शेयर करोगे. कैसे करना मैं कल सब बताऊंगा आपको. 7 बजे शुरू होगा हमारा, 10 बजे तक होगा. मैं आपको बताऊंगा कैसे वो लिंक को शेयर करना है. मैं आपके चार्ट को चेक करूंगा, एंड देन आई विल शेयर अक्रॉस माय व्यू फीडबैक इन टर्म्स ऑफ whether you have done it right, whether you have done it wrong, and we will create a life transformation journal also, where I will teach you how you have to document your trades, your orders. सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है आपको, वो मैं आपको सिखाऊंगा. वो सारी चीजें करेंगे हम यहाँ पे. और फिर हम शुरू करेंगे कैसे रिस्क मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस. ऐसा हुआ है आपके साथ कि स्टॉप लॉस आप 100 पॉइंट्स का लगाते थे, अभी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस काम करेगा क्या? आई एम आस्किंग यू. इफ यू ऑलवेज पुट 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, विल इट वर्क नाउ? नहीं ना. Stop loss will not work 100 points. So you need to know the method, the technique, the strategy that actually works.
and the mentor can reduce that time frame of your learning, which might take years into 3-4 months of time. And ये mentorship हमारा is going to extend for 5 months because it is going to end with Kal Chakra, which is going to be after June July में तक चलेगा. तो अभी तो March, April, May, June, July 5 महीना चलेगा हमारा sessions. So it's going to be lovely. And next mentorship session might start after around 8, 9, 10 months. तो अगर आप अभी नहीं हो part, you might miss out the Hall of Fame. You might miss out this method during the event. How you have to trade the right way. ये सारी चीजें miss out हो जाएगी आपके. But are you okay with that? For waiting another 8 months to start with. That's how it's going to happen. So don't worry about it. And there is another question here. Sir, can I register now? That you have to check with my team. I'm not sure if we have we have more seats left or not. We are already stopped the enrollment, but if we have few more seats out left, then my team is going to help you out. You can simply do that. Next Brahmastra is not now. Next Brahmastra, as I said, is going to be after 9 months or so. आपका number drop कर दीजिए. My team will. So anyone who is interested can drop the number. My team will check if you can still join current batch or not. They will do profiling. They will check, and then only we will onboard. So we are starting that process not only for Hall of Fame. We are starting that process eventually where we filter out whether you fit in to be a part of the Brahmastra. Because I want to teach people who are serious traders who wants to seriously learn and trade and not gamble in the market. तो ही हम लेंगे वो बैच में, मतलब वो फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हम शुरू करने वाले. सो इसीलिए सिल्वर के बारे में अभी बात नहीं कर रहा मयंक. मैं सिल्वर का मैं ट्वीट कर दूंगा आपके लिए चार्ट. ओके, वो हम करेंगे. एंड लवली गाइस, सो आई थिंक wow, it's already 55 minutes. It's fantastic, guys, and Ashima, be there. I'm going to be speaking with you soon. It has been lovely connecting on Tuesday at 4 right now, and I'll continue these webinars if this is going to be useful for you all. लेकिन आपके कमेंट और सारी चीजें आनी चाहिए यहाँ पर. विजय कुमार को डिटेल्स दीजिए प्लीज. यहाँ पर आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए विजय. My colleague is going to help you out with that. Sachin, glad to have you also here. And queries आपका ready रखना Ashima when we meet for the Hall of Fame, and we will be recording that. Also, we'll be using a part of the video to showcase the world how you made it big. So that's going to be a part of it. चलिए आज के लिए इतना ही. Wonderful. I'll continue the webinar if it's useful for you all. Thank you very much. People on YouTube, do ensure to like, subscribe the channel, and see you again for the Nifty levels on the Twitter. I'm going to share it across. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.